Let's start exercise 3.5. Question number 1. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution, infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using multiplication method. इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये निकालना है कि वेदर द गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आर हैविंग सॉल्यूशन और नॉट, और अगर सॉल्यूशन है तो यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर. सो फॉर यू आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन. हियर इट इज x minus 3y minus 3 is equal to 0. 3 minus 9y minus 2 is equal to 0. What are you seeing here? Here we are seeing that here we have a1 a2 b1 b2 की पहले आप वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यूज़ रखने के बाद आप ये देखेंगे कि सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है. सो डायरेक्टली आई एम डूइंग फॉर यूनिक सॉल्यूशन, राइट. सो हियर वी हैव ऑन कंपेयरिंग equations, let's say it is 1 and it is 2. Equation first and second with ax plus by plus c is equal to 0. Statements are very important in view of your 10th class board examination, so please do care for this. So on comparing we get a1 is equal to 1, coefficient of x, b1 is equal to minus 3, coefficient of y, c1 is minus 3, constant in first equation. Now a2 is 3, coefficient of x once again, b2 is minus 9, coefficient of y, and c2 is the constant in second equation minus 2, right. अब हमें क्या करना है? We have to find the ratios. Now for ratios, a1 upon a2 is equal to 1 upon 3, directly I am writing, and b1 upon b2 is equal to what? Minus 3 upon 9, that is 3 1 is 3, 3 is 9, negative sign is there, 1 upon 3. So here we know, अब ये रेशो निकालेंगे नहीं बिकॉज यहीं से हमें पता चल गया 1 upon 3 और ये है minus 1 upon 3. So both are not equal. Okay. Oh sorry, I did not take minus 9. It is also minus 9. So minus minus will be cancelled. So we can see both are equal. Now we are going to get c1 upon c2. So this is minus 3 upon minus 2, which is not equal at all. Okay. Therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. ये दोनों तो 1 upon 3 आ रहे हैं, लेकिन c1 upon c2 के इक्वल नहीं है. और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. हैंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स. ओके. क्वेश्चन में सबसे पहले हमने कंपैरिजन किया, रेशियोज फाइंड की, एंड वी गॉट दैट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस इक्वेशन. लेकिन अगर सॉल्यूशन होता तो हम जाते यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पे, फिर हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो. बट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ मैथड हियर. ओके. नाउ आई एम टेकिंग दैट पार्ट where solution exists. So I am going to take third part, or where there we have to use unique solutions. So I am leaving second and third. I am taking fourth part. In fourth part, equations are given pair of linear
equations. Pair of linear equations. X minus 3y minus 7 is equal to 0. This is my first equation. Now second is 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. This is my second equation. So this is our pair of linear equation. On comparing equations first and second with ax plus by plus c is equal to 0 we get, जैसा हमने पहले किया था, similarly we are going to get the values of a1 a2 b1 b2 c1 c2. So compare your equation first and note down the values of a1 is 1, b1 is minus 3, c1 is minus 7, a2 is 3, b2 is minus 3, c2 is minus 15. Here we have the values. Now ratios. a1 upon a2 is equal to 1 upon 3. b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 3. Cancelled out. Answer is 1. Here there is no need to go for c1 c2 as we can see that both the values are not equal. Therefore a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. b1 upon b2. So if they are not equal, then solution will be, hence there exists unique solution. There exists unique solution. Now to find unique solution, we have to use cross multiplication method. By using cross multiplication method, we have, कैसे करना था, x y and 1 कहाँ से शुरू करना है मेरे साथ साथ बताओ. सो b1 b2 c1 c2 a1 a2 और एंड फिर से वही b1 b2 पर करना है. सो द रेशियोज x अपॉन denominator of x is b1 c2 minus b2 c1. b1 c2 minus c1 b2 is equal to y upon c1 a2 minus a1 c2. a2 c1 minus a1 c2. इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है मुझे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बना रहे. इज इक्वल टू 1 अपॉन अगेन a1 b2 माइनस b1 a2. a1 b2 minus a2 b1. Right? So we got it. Now easily you can find out the value of x if we take this one is equal to third one, क्योंकि थर्ड वन कांस्टेंट है. फर्स्ट को थर्ड के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, सेकंड को थर्ड के साथ करेंगे तो y की वैल्यू आएगी. सो नाउ वी हैव फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड. नाउ x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. I will put the values at last. So x is equal to
b1 c2 minus b2 c1 whole upon a1 b2 minus a2 b1. Okay, this way we got it. Now substitute the values. Therefore x is equal to b1 c2. The value of b1 is minus 3, c2 is minus 15, minus b2 is minus 3, and c1 is minus 7. Now denominator a1 b2, a1 is 1 and b2 is minus 3, minus a2 is 3 and b1 is minus 3. So what you are going to get? Minus minus plus 15 threes are 45, minus 3 sevens are 21, minus 3 minus minus plus 9. So 45 minus 21 is 5 minus 1 is 4, 2 is 2, 24, 9 minus 3 is 6. 6 fours are 24. So answer is 4. X is equal to 4. Now substitute the values of for y. For y from second and third, y is equal to, this will go to this side, denominator will be same. So here we have y is equal to a2 c1 minus a1 c2 whole upon a1 b2 minus a2 c1. Okay, so values of this, a2 is 3, c1 is minus 7, minus a1 is 1, c2 is minus 15 whole upon a1 is 1, b2 is minus 3, minus a2 is 3 and c1 is minus 7. Hence we have the value 3 sevens are 21, minus minus plus 15 ones are 15 whole upon minus 3 minus minus plus 21. 21 minus 15 is 6, minus because 21 is greater, 21 minus 3, 11 minus 3 is 8, it is 18. 6 3s are 18, so minus 1 upon 3. Y is equal to minus 1 upon 3. So unique solution. Solution is xy is equal to 4 is 1 upon 3. This is our answer. Okay. So this way, by using cross multiplication method, we can find out the value of x and y. I hope that you must understand. Rest two parts of first question you have to do on your own. Now question number 2. For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? We must understand question very carefully. 2x plus 3y is equal to 7. A minus b into x plus a plus by is equal to 3a plus b minus 2. So we have this question. Here what is given? We have to find the value of a and b where infinitely many solutions are given to you. Infinitely many solutions are there. So what we know? a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 all must be equal. All must be equal. Therefore, for infinite number of solutions we get 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. Okay,
So this way I have written all are equal. Reason लिखेंगे because a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 for infinitely many solutions. So from first and second, this is third. From first and second we have 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू a plus b is equal to 3 into a minus b. Okay, so this will become 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. एक तरफ ले लेंगे 2a minus 3a is equal to minus 3b minus 2b. So it will be minus a is equal to minus 5b. Cancel. So a is equal to 5b. Take it as third equation. Okay, now from second and third. Now from second and third. From second and third, we have what we have 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. Let's check. 3 into 3a plus b minus 2 is equal to 7 into a plus b. Okay, solve it. 9a 3b minus 6 7a plus 7b. ओके, अब क्या करेंगे, वही a वाली टर्म्स एक साथ ले लेंगे, b वाली टर्म्स एक साथ ले लेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b और 6 में माइनस के इधर ले जाके 6 लिख रही हूँ इसको, राइट. तो ये हो जाएगा आपका क्या, 9 में से 7 गया 2a, 3 माइनस 7 में 3 गया 4 माइनस का 4b इज इक्वल टू 6. अब now from third put the value of a in fourth equation. This is our fourth equation. In place of a I am writing 5b minus 4b is equal to 6. 10b minus 4b is equal to 6. 6b is equal to 6, so b is equal to 1. Now put the value of b in third equation. Therefore a is equal to 5 into 1, that is 5. So a की value हो गई 5. A is 5, b is 1. So this is the solution of second question. Now I am not doing third question because here you have to use substitution method and cross multiplication method in a pair of linear equations. Now I am going to start question number 4. In question number 4, a part of monthly hostel charges. First of all, question was that from the pair of linear equation in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. इसमें आप कोई भी method use कर सकते हो. Okay, so first question is a pair of monthly hostel charges is fixed. इस तरह का question हमने पहले भी किया है. मंथली चार्जेस फिक्स्ड हैं एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस. बाकी डिपेंड करता है कि अगर वो मैस में फूड खाता है उसके अकॉर्डिंग उसके चार्जेस. व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स food for 26 days pays 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. हमें cost of food per day निकालना है और fixed charges हमने लेट कर लिया y है और हमने cost of food per day हमने निकाल ली x. पहले अगर हमने y लिया है तो दूसरी बार हम उसको x लेट कर सकते हैं. It's up to you कि how you are going to ask or how you are going to let. So let's see the solution.
दो बच्चे हैं ए एंड बी. In case of student A, in case of student B, we have to make two equations. Okay, so I am going to do let fixed hostel charge. कैसा कहा है उसने? मंथली. तो हम यहाँ लिखेंगे मंथली. So let fixed hostel charge monthly be rupees Y and cost of food per day be rupees X. ये लेट कर लिया. So in case of student A, case A या case of student A is what? He has to pay Y rupees. It is fixed. और उसने जो खाना खाया था वो कितने दिन खाया था? A takes food for 20 days. A takes food for 20 days. एक दिन का X रुपीज़ देना है तो 20 डेज़ का कितना देना है? 20 रुपीज़. और उसने पे कितना किया था? She has to pay rupees 1000. This is my first equation. Okay. और केस बी यानी कि स्टूडेंट बी के लिए फिक्स चार्जेस इसको भी देने हैं, बट इसने जो खाना खाया इट वाज फॉर 26 डेज और इसको पे करने पर पड़े 1180. इट इज़ माय सेकंड इक्वेशन. सो फर्स्ट और सेकंड से हम कर सकते हैं बिकॉज वाई बिल्कुल सेम है. सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं. अब हमें ये देखना है इक्वेशन में कौन सा मेथड हमें ज़्यादा सुटेबल लगता है. यहाँ हमें साफ दिख रहा है y इक्वल है तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. सो वी गेट y से y कैंसिल. 26 में से 20 या पहले आप लिख लीजिए बिकॉज आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है. फिर 26x इसको उधर ले आए माइनस 1180 यहाँ पर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर y प्लस 20x माइनस 1000 इज इक्वल टू 0. कैंसिल. साइन विल बी चेंज्ड. 26 में से 20 गया 6x. यहाँ से माइनस करेंगे ये बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा. 180 रुपीज़ इज इक्वल टू 0. सो 6x इज इक्वल टू 180. x is equal to 180 upon 6. So x is 30 rupees. क्या था ये? पर डे फूड की कॉस्ट. इट वॉज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. अब हमें मंथली प्राइस निकालना है तो हम किसी भी एक में रख के निकाल सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूट और पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में y हमें निकालना है 20 डेज़ और पर डे की कॉस्ट 30 रुपीज़ आ गई. 1000 उसने पे किया तो y प्लस 3 2 600 1000. सो y इज इक्वल टू 1000 माइनस 600. सो ये रुपीज़ 400. सो फिक्स प्राइस 400 and cost of food per day is 30 rupees. Hence the answer is fixed hostel charges rupees 30 and cost of food per day कितना आया है? रुपीज़ 400. So hence the answer is this one. Now we are moving to next question. We are going to do third part. Rest of the part you have to do in homework. यश scored 40 marks in a test. एक टेस्ट में उसने 40 marks gain किए हैं. Getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer,
and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Total number of questions हमें निकालने हैं. So let कि उसने जो रॉन्ग क्वेश्चन किए वो x किए, राइट जो किए वो y किए, रॉन्ग या फिर उल्टा भी लेट कर सकते हैं, राइट आंसर्स वर x एंड रॉन्ग वर y. राइट, टोटल नंबर हो जाएंगे x प्लस वाई. फिर उसमें हम फर्स्ट केस लगा देंगे कि हर राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स डिडक्ट होने पड़े, तो x क्वेश्चंस में उसको कितने मार्क्स डिडक्ट हुए? 3x. रॉन्ग उसने y किए, हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर गया, तो कितने मार्क्स डिडक्ट हुए? y. राइट, तो अगर 4 मार्क्स अवॉर्ड होते और 2 मार्क्स रॉन्ग के लिए डिडक्ट होते तब यश को मिलते 50 मार्क्स. सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट. सो लेट स्टार्ट. Let number of right answer be x. Right answer be x and number of wrong answers be y. Therefore, total number of questions is equal to x plus y. X plus y. Here we are going to start in first case. In first case क्या हो रहा है? अगर वो क्वेश्चन ठीक करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं. तो 3 मार्क्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x, तो टोटल मार्क्स मिले उसको 3x. और उसमें से y मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है, तो 1 इंटू वाई. और उसको स्कोर हुआ 40 marks according to question. This is our first. In second case we have कि अगर ऐसा होता कि हर सही क्वेश्चन के लिए उसको 4 मार्क्स मिलते तो टोटल मार्क्स मिलते 4x, और हर गलत के लिए उसको 2 मार्क्स डिडक्ट करने पड़ते और क्वेश्चन अटैम्प्ट किए y रॉन्ग, सो 2y, तो उसको अवार्ड मिलता 50 क्वेश्चंस का. दिस इज आवर सेकेंड part. So here you can apply substitution method or you can use cross multiplication method as well. So here I am using cross multiplication method. X, y, 1. So here we have b1. b1 is -1, b2 is -2. b1 के बाद c1 आएगा, तो c1 क्योंकि इधर आएगा तो -40 लेना है, because we have to convert it in the form of -40 equal to 0. Okay, so -40 -50, a1 a2, this is 3 and 4, last again -1 -2, so x upon minus minus plus 50 plus -80 is equal to y upon 4 4s are 16 -60 और minus minus plus 3 5s are 15, 150 is equal to 1 upon 3 2s are 6 plus 4. राइट, सो फर्स्ट और थर्ड से हम निकालेंगे x अपॉन -30 is equal to 1 upon -2. This implies x is equal to -30 upon -2. So this is 15. So he or she attempted 15 questions which were correct. 15 questions were correct. Now we can substitute the value of x in any of the equation. I am substituting in first. So 3 into 15 minus y is equal to 40. So this will be 3 5s are, sorry, 15 3s are 45 minus y is equal to 40. This implies y is equal to 5. So wrong questions attempted
5 और हमें क्या निकालने थे 12 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो 15 plus 5. So total number of question in test paper were x plus y. 15 plus 5, that is 20 questions. So hence answer is 20 question. It was all about cross multiplication method, and rest of the questions you have to do in homework, or tomorrow we are going to find up this chapter and we will start the journey of your board questions, your assignment, your problems, as well as I will tell you about syllabus of 10th class. Thank you so much. Bye bye.